programming. So second one is the knowledge of complexity, like space complexity and time complexity. So here we'll start our session with the knowledge of complexity to see time and space complexity. And after that, we will move forward to the mathematical approach to solve various problems. So let's start with the complexity. So I think annotation is visible onto the screen. Yes, sir. Yes, sir. So this is the very important step in the problem solving. Complexity. If we are not having knowledge which code is optimized or what resource is used to solve that problem, then we will never identify good solution and bad solution. So our objective is to write optimized solution here. So to analyze any algorithm, if you are writing any algorithm for the problem, we have categorized it into two categories, that is time and space complexity. Time means total running time taken by algorithm to keep the desired result is time complexity. It is totally dependent on the CPU. And here, if we are talking about space complexity, here we are talking about the extra space taken by our code to solve problem. Okay. So space mean in the sense main memory is RAM. It is very important part. We are not considering secondary storage in space complexity. We are considering only main memory, that is RAM here. In the time complexity, we are considering the CPU time because this is the costly resource. Processor is the costly resource of the computer. So if you are using single processor system, in that case, if our program is not running efficiently and unnecessarily it is using CPU or making CPU in the idle condition, so our program is not good. Our solution is not optimized. That is why if we are using software of some companies, they are running very fast, and other same software of other companies are running slow. They are facing besides. So the reason is behind development approach in the development. So to analyze the time complexity and space complexity, we have some notations for that. Okay, and some cases. So first we discuss the worst case. Second one is best case. And the third one is average case. So if we are solving any problem, what will be the performance of that algorithm in worst case scenarios? What will be the performance in the best case, and what will be the performance in the average case? If we are able to analyze these points, then only we will decide our algorithm is best or not. So we can take one example. Suppose there is a class and 60 students are there. Okay, 60 students are in the class, and we want to search one specific student. Okay,
The name is suppose Ramesh. We want to search Ramesh in the class, whether Ramesh is there in the class or not. So first approach, what we will do in the problem solving, we will try to find brute force solution. Basic approach, what we'll do, suppose this is the class and here we have here we have board, here students are sitting like this, here also we have students sitting like this. So we will compare one by one. We'll ask who is Ramesh, 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 Ramesh. Like this, we have compared, and finally Ramesh is sitting here. Suppose Ramesh is sitting here. So in this case, how much effort we have to use for finding Ramesh? Like if there are 60 students, so we have to do 60 comparisons. And for the comparison, we are using CPU resource. Okay. Like if we are talking in the terms of resource, so in the system we are calling CPU as the main resource. So 60 comparisons are required to find Ramesh. Only 60 students are there in the class, so we cannot go beyond 60. It means the upper limit is what? Upper limit for that upper limit is 60. So this is the worst case. In the worst case, we have taken 60 comparisons. Okay. So what will be the best case for this? Can anyone suggest what will be best case for this? Am I audible? First student is Ramesh. Yeah, good. So if first student is Ramesh, if here the first student is Ramesh, it means what we have to first we compare and we find Ramesh. This is there. So here is Ramesh. So whether 60 student in the class or 100 student in the class or 200 or 1000 doesn't matter. We will just compare and unfortunately we find first student is Ramesh. So it will take one comparison always. In average case, suppose Ramesh is sitting here. So it will take approximately 30 comparisons. So for the same problem, we have for the same algorithm we have three scenarios. In one we have 60 comparison, in the other one we have one comparison, and in uh, third one we have 30 comparisons. So if fortunately we are finding the first student as Ramesh, that is the best case. That is the best case. It is not mandatory that every time we will have first student as our desired student. And in average case, somehow around 30, 31, 32, 29, 28, around this. This is the average comparison. So this is called average case. Average case. Average case. Okay. So like this, for any algorithm, we can find worst case, best case, and average case. And to denote these things, we are using some notations called big O notation. Big O notation like this. Then omega notation like this, and then theta notation. So basically, big O is used for worst case. This is used for best case.
and this one is used for the average case. Best case, worst case, and average case. So this one is very important. Worst case is very important. So if we are trying to find out the capacity of any system, we just consider the worst case scenario. Okay. We already know in the best case everyone will perform good, but in the worst case, what will be performance? That is the point of uh, consideration. Okay. So if we are talking about the complexity of any algorithm, we are considering a worst case scenario. If any algorithm is taking order of n time, we go of n time in the worst case. So this is the complexity of this algorithm. This is the complexity known for that algorithm. Suppose there are two algorithms like A1 and A2, and A1 is taking in best case, it is taking constant time, and in worst case, it is taking order of n square time. Here, another algorithm which is taking order of n time in best case and order of n time worst case. So we'll say this algorithm is better because the upper limit for this algorithm is order of n. In the worst case, it will not go beyond order of n. So this one is the best. So if we are comparing two algorithms, we are comparing the performance of the algorithm on the basis of worst case rather than on the basis of best case. The first one. Okay. And how will decide what will be the complexity, like order of n square or like that. So for that, very simple thing is that if our performance is this is very important point. If our performance is depending, on the number of sample size, or we can say sample size. In this case, we can say that the performance is order of n, because if the sample size is n, whatever the size is n, we don't know the value of n. In that case, the performance will be order of n. Suppose it is related to the square of the number of sample size, that will be called as order of n square. That means suppose if we are having 1, then the output will be 1. If we are having 2, then the output will be 4. If we are having 3 and it is 9, it means here we are using quadratic function. In that case, the complexity will be order of n square. But here one point is very important that you should remember. If our value is not depending on number of sample size, in that case the complexity will be constant, and we denote constant as order of 1. How? Suppose we have 60 students and we take 3 comparisons to find. Let's suppose we are taking 3 comparisons to find something. So here we are not having 1, but we are having 3, which 3 is fixed. 3 is fixed. Whether the student is 60, whether the student is 65 or 70, 1000, 1 lakh, it will not depend on sample size. So this will be known as constant. Sometimes students are getting confused. If we are writing order of 3, it means it is not constant. So if it is fixed, whatever the value is there, suppose there are 60 students and we are taking 60 comparisons, that is also constant if we increase our sample size from 60 to 61, but still we are taking 60 comparison. If we increase our sample size from 61 to 62, still we are taking 60 comparison. In that case, we can say we are taking constant time. So we should not confuse about this number. Constant
The notation of constant is order of 1, but it is not mandatory that the number will be, the time will be 1. Any fixed number will be considered as constant time complexity. It is very important point. So sometimes it is suppose there is an elements like this. Okay, like this, connected like this, and we can access them one by one. But it means we can start from this point only, then we can access. So anyone asked us to find the kth student from the list. So k is fixed. So it will be order of k. Every time we have to traverse k time. So k is fixed. We are not saying that k is variable. Kth element, it means we are saying that 10th element from the linear list. So we'll always take 10 comparisons. Whether the number of elements here is 100, 200, 1000 or anything more. It is not, our solution is not depending on the number of samples. So we will call it as a constant. We will call it as fixed. We should not confuse about this. Many times these type of questions are asked in the interview. Many times. This is constant, where k is constant. But if it is related to n, if the k is related to n and n is increasing, in that case we'll say this is not fixed. This is not constant. Why we consider all these? Because when in the algorithm, whenever we are going to study algorithm, in that the complexity is denoted in the terms of growth of function. Growth of function. It means if we draw a graph, so here what we have, here we have n, here we have fn function value, y equals to fn. So suppose function is there. This is the function. Okay? And this is relatively like this. Okay, and this is the n node. It means before this we cannot say anything, but after this we are saying that this function fn is always lower than this is cgn. It means this is the upper bound for this function fn. Upper bound. This will never cross this boundary. It's the upper bound. Upper bound. Means it is in the worst case. In the worst case, it will be there. If we are trying like this will be the, suppose this is G1 and this is G2n. So this will be the lower bound. It means in the best case, we will take this time. Suppose if we are taking 10 milliseconds to find the solution, we cannot find solution in less than 10 milliseconds. This is the best case. This is the lower one. So like this, we are denoting growth of function to denote the performance of any algorithm. So it is very important to understand best case, worst case, and the average case. Okay. So same thing is used for space complexity, but if one thing is very important, that is called as time space trade-off. It means if we increase space and we decrease time, then go for it. But if we decrease space and due to this we increase time, so we should not select this one, because time is more important in comparison to space. That's why we are finding time efficient algorithm. So I hope this is clear to all of you.
about the time complexity. Any queries? Any queries in the complexity? Complexity is very important term, so we should be clear about this. Any doubt, audience? No, sir. Okay, fine. So now we are moving towards the mathematical approach. I have covered this complexity term because in the further sessions you will listen this term complexity. So it is very important here. So why we use mathematical approach? So we'll see one example here. With the help of mathematical approach, we are able to solve some problems efficiently. So first we'll take one example. Suppose we want to find the sum of n natural numbers. If we natural numbers, so if we are starting our journey in the programming and we study loop, this is the first program that we have to make this. So the sum of n natural numbers. So can anyone answer how we can write a program for this? Anyone? कैसे हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे n नेचुरल नंबर का सम का? This very basic question. We will just use brute force approach to solve this. So what we are doing, we are just simply writing one loop. Int I equals to 1, I is less or equal to n, I plus plus. And in this, what we'll do, sum equals to sum plus I. And in the last, we'll just print this sum. And the initial value of sum is okay. So that is correct. Program is good, no issue. But the question arises, how much time will it take to solve this? If we have written this program, this loop will run n times. N times. Why we are saying n times? Suppose the value of n is 4, then this will run 4 times. If the value of n is 10, it will run 10 times. If the value of n is 1000, it will run 1000 times. If it is 1 lakh, it will run 1 lakh times. So what will be the complexity of this program? Can anyone say?
What will be the time complexity of this program? Time complexity. I am asking worst case complexity here. Whenever we'll talk about the time complexity, we'll consider worst case. Okay. So what will be worst case? And Very good. Order of. And this is general process to to programming. But is there any way to solve this problem? Is any other efficient way to solve this rather than using loop? Recursion. Recursion. Recursion will also take same time, but you will use more resources. We are solving any problem recursively that is already written in iterative way. It will take more resource like stack and others. That's also possible, but we are trying to solve this in very simple and efficient way. Can we use some mathematical knowledge to solve this problem? Because as a programmer, we know mathematical approach also. Sir, we can use the formula n into n plus 1 by 2. Yeah, exactly. Good. So we can. We have given this answer. Yes, sir. Hashtag. Good. Yes. So we can use formula for this instead of writing this code unnecessarily. Well, simply we will take hardly 1 minute to write this code. But for system, in the worst case, it needs a lot of resources, time of the CPU, which can be solved in the constant time if we use mathematical formula for that. This can be solved simply using formula sum of n natural number, which is n into n plus 1 by 2. So it will not depend on the value of n, whether it is 10, whether it is 20, whether it is 50, 1 lakh, 2 lakh. It will do some calculations and give you answer. So in that case, the worst case complexity of this algorithm or this formula will be constant, and we denote constant as order of 1. So what we have done, we have just used mathematical knowledge, mathematical approach to solve this rather than simply writing code. We know some syntax, we know some loop, and just started writing the code. So we can see here the program that was taking order of n time is converted into constant time. Which is constant time. If you are writing any algorithm of constant time, it is very efficient algorithm. Okay. Same thing can be done. Suppose if we ask you to find the sum of even numbers, a sum of odd numbers from 1 to 100. Okay. So what you will do? You will again do programming. You will use loop because we are going to find the sum of even numbers from 1 to 100 or 200. For that, even or odd numbers. For that, first of all, we have to check whether the number is odd or even. Okay. So let's write the code for that. We'll again have some odd.
So I am assuming that you are having some basic knowledge of C programming. Okay. So int some or suppose this is the variable name. We have initialized this as 0. And whenever we are doing some arithmetic operation on the variable, we need to initialize that variables because in the initial it is having garbage value. So if we not initialize that variable, our output will be wrong. So again, we'll run a loop for int I equals to 1, I less or equal to 100, I plus plus. In this, we'll check whether I modulus 2 equals to 0. It means if it is if the value of I is even, in that case we do nothing. So what we'll do, we'll just continue. Here we will write continue. So what is the purpose of writing continue? It will skip other code and move to next iteration of our program. Okay. If it is not, it means it is odd number. In that case, we'll just add some odd equals to some odd plus 30. And we will, in the last, we will print up %d some odd. Okay. So this is the code. Again, we have it. Now just tell me, what will be the complexity of this code? We are writing this code. How much time will be taken by this? Suppose this value can be, here it is 100. It can be anything. It means n. So what will be time complexity of this? What will be complexity of this? Worst case complexity. Anyone? Can you answer? Anyone? Again, it is very simple solution. Whenever we are having any loop in our program, if we are going to find the complexity of that, we just try to check how much time this loop will run. This is the very important part. Other statements are running, statements are written in this loop. So the running count or running time of these statements will depend on the number of iteration of this loop. So this loop is running 99 times or 100 times. So these all statements will run 100 times. Suppose this loop is running n times. In that case also these statements will run n times. So not writing, if we are writing complexity of any program or algorithm, we are not writing exact running time. It's approximate. So it will take order of n time. Do you agree or not?
Yes, sir. Yeah. So it will take order of n time to find the sum of odd numbers from 1 to 100 or 1 to n. Again, we are using loop as a normal programmer. We are not doing competitive coding. We don't want to apply any mathematical knowledge. We have good syntax, with good knowledge of programming syntax. Just use it and will definitely will get correct answer. The output will be correct. Or there will be no change in the output, no change in result. But there is change in process of finding the result. Okay? That makes you different from other coders. And this is the objective of our competitive coding. Okay, so let us solve this problem using mathematical approach. So what we'll do, we'll just write odd numbers like 1, 3, 5 up to suppose 99. This is the or odd numbers. So the first number is 1, the last number is 99. So we can say that the first term is 1 and the nth term, the last term is 99 here. And now we want to find out d. Okay, so difference of two terms, any two terms. You can see here it is fixed. So difference will be, suppose we are taking second minus first term is 2. So difference is 2. So if we try to write the formula, we can say that nth term will be the first term plus and minus 1 into t. This is the formula for the nth term of the okay. I think all you know this formula. Am I correct? I have written right formula. Formula सही है नहीं? Yes, sir. So if we put the value here 99, first term is 1 plus n minus 1 into 2. We solve this n minus 1 into 2 equals to 99 minus, that is 98. Okay. So n minus 1 is 98 upon 2, that is 48. Okay, so n is sorry, this is 49 divided by 2, that is 49. 49 plus 1, this is 50. Okay. So n is 50. So we have find the n. Now we can put this into the formula of the series, sum of the series of AP, or one, I think simple formula is, and the formula is n by 2. I think sum of the n number of the AP is n by 2 a plus l. Am I correct? Is this correct formula? Sum of n terms of the AP. This is the first term, this is the last term. This is correct formula. So we can write here 50 by 2 and then 1 plus 99, that is 100. Sorry, 25 into 100, that is 2500. So with some sort of calculations, whether it is the n term and value of n is 1000, 1 lakh, or the value of this is 10 lakh, our calculation will be fixed. So whenever our calculation is fixed, whether it is 10 step to 20 step, 25 step, it doesn't matter. It will be order of 1. Or you can write also, I think one formula is also there, that is n square. You can also use n square. 50 square is 2500. Same will be there.
constant time. We have just find the solution of this in the constant time rather than writing uh, the loop. So here again we have used our mathematical knowledge to solve like such type of problems. So whenever you are doing some competitive coding, at that time you should find out the minimum possible complexity, minimum possible uh, time in which problem can be solved. Definitely the answer will be same. Previously we have written a code and here we have written some formula. So what we'll do, we'll just take value of n and then we'll initialize the first term of the series and then write one line formula and print that value. It will take order of one time to solve that problem. So here what differs? Due to our approach, if we are using one approach, we are solving that problem in constant time. If we are using our programming, simple programming knowledge, we are solving that problem in order of n time or order of n square time sometimes. So at the small level, we are not seeing difference because we are just uh, thinking about 10, 20, 50 or 100 numbers. Suppose the data is very large. So whenever we are talking about the complexity of any algorithm, we are not considering only small sample size. We are considering a large sample size. In that case, what will be the output? It is very important. So in the large case, this will be very time efficient in comparison to previous one, in which we have just used loops. Okay. Is it clear to all of you? Any query? Any queries? If you have any query, just raise hand. Otherwise, we will proceed further. Okay. Fine. You can write code for you can do programming for these things. We can solve other problems also with the help of this, like missing number. Suppose this is a very good question. Suppose we have numbers from 1, 2, 3, 4, then 6, 7, 8, like this. And someone asks you find the missing number in this. Missing number. So find the missing number. How you'll find missing number? Anyone? Can you suggest how can you find missing number?
Anyone? तो भी आपको समझ में आता है, Students, is there बताइए। any query or participants? Is there any query? Just I want answer for this. If the number is given and you want to find out missing number from here, what you will do? Am I audible? Yes, sir. कैसे करेंगे? Yes, sir. कोई आइडिया नहीं। चलो तो डिस्कस करते हैं इसको। हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये सीक्वेंस में दिख रहा है। नंबर तुम्हारे सीक्वेंस में कहाँ से कहाँ तक है? 1 to n, मान लो कोई नंबर दिया गया है सीक्वेंस में, उसमें कोई नंबर मिसिंग है, ये हमें पता करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं भाई? अगर 1 से n तक वो नंबर होगा तो ये तो कंफर्म है कि उनका अगर हम सम बात करें तो फॉर्मूला लगा लेंगे n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या है? 8। ठीक है, तो अगर इनका सम जो होना चाहिए तो वो इस तरीके से कुछ आना चाहिए। ठीक है, ये जो हमें रियल में नंबर दिए गए हैं, अगर हम इसका सम निकाल लें, मतलब क्या कर दें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, अगर इनका सम निकालते हैं तो कितना आएगा? बताइए, व्हाट विल बी सम ऑफ दिस नंबर? 31. 31। ठीक है, और हमारे पास जो सम आया है वो कितना आया है? जो सम होना चाहिए टोटल वो 36। तो अगर हम 36 में से इसको हम माइनस कर दें 31 को, तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो दिस इज द मिसिंग नंबर। लॉजिकली हमें क्या लिखा? हमारे पास जो नंबर है उनका सम, जो कंटिन्यूअस में सारे नंबर्स थे उनका सम। तो अगर हम डिफरेंस निकाले तो हमें वही नंबर मिलेगा जो हमें नंबर दिया गया है उसमें जो मिसिंग है, यही मिसिंग था। 4 के बाद 5 नहीं था, 6 7 8। तो हमने क्या किया, कैसे निकाल लिया भाई? पहले हमने फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमें मैथमेटिकल अप्रोच पता है कि अगर इस टाइप का कुछ है तो हम इसको, अगर हमें ये वाला हमें नहीं पता हो तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। फिर हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 कंपेयर करेंगे, उसके बाद कौन सा टर्म आना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। हमें मैथमेटिकल अप्रोच पता था वही, अगर 1 से n तक नंबर हमारे पास हैं तो उनका जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए 36। अब जो हमारे पास एक्चुअल में है वैल्यू, उसको हम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मिसिंग टर्म है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या दूसरा, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही रहने वाली है। दूसरा अप्रोच आप क्या यूज कर सकते हो कि जो सम 36 आया है उस 36 में से 1 बाई 1 इन नंबर्स को माइनस करते जाओ। -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8, जो लास्ट में बच जाएगी वैल्यू वही मिसिंग नंबर होगा। बताइए, am I right or not? Yes, sir. So this is also mathematical approach that we can use here to solve these problems. Okay, one more problem we can see. Suppose we have numbers given. Suppose numbers are 2, 4, 3, 8. It is not sorted. 2, 4, 3, 8, 9, 10, 11, like this numbers are given.
What we want? We want to find out minimum sum and maximum sum. Minimum sum and maximum sum of n minus 1 element. Suppose we have one constraint here, n minus 1 elements, n minus 1 elements. इसका मतलब क्या है कि n एलिमेंट्स है, उसमें से हमें n माइनस 1 एलिमेंट्स को यूज करना है और बताना है कि मिनिमम सम कितना होगा और मैक्सिमम सम कितना होगा। कैसे करेंगे इसको? आपको ये नंबर दिए गया ना, जैसे मान लो कितने नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको 6 इसमें से यूज करने हैं और आपको बताना है कि मिनिमम सम कितना होगा पॉसिबल सम और मैक्सिमम पॉसिबल सम कितना होगा। सिंपल, हम अभी ये बिल्कुल इतना इतना इजी ये सब इनका कोडिंग है। ये तो बिल्कुल ही आप प्रोग्राम ऐसे लिखोगे, आप बोलोगे तभी लास्ट के हाफ एन आवर में इनकी कोडिंग कर देंगे सभी की 1 by 1, या आप ट्राई करना, जो नहीं समझ में आएगा आप लोग कर देंगे। बहुत इजी है इनकी कोडिंग। बेसिकली हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग एक अप्रोच देख रहे हैं कि किस तरीके से हम एफिशिएंट कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार कई बार देखते हैं प्लेसमेंट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं, बोलते हैं सर सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए थे, कोड भी सबमिट हो गया था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों से बातें हुई, फिर वो बाद में उनको काउंसलिंग किया गया, उनको बताया कि उनकी क्या इश्यूज आ रही हैं, फिर वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। उसमें रीजन यही है कि आपने कोड तो लिख दिया, आउटपुट तो सही आ रहा है, लेकिन आपका जो कोड है वो एफिशिएंट नहीं है, आपका जो अप्रोच है वो सही नहीं है, किसी और ने बहुत अच्छे ढंग से उसको किया हुआ है। तो मान लीजिए 100 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें से जो टॉप के 20 थे जो एफिशिएंट कोड लिखे हुए हैं और उनको लेना भी इसी को था, उसमें तो आप बाहर हो जाओगे। या मान लो 50 को लेना है, 50 ने अच्छी कोडिंग की, एफिशिएंट कोडिंग किया, तो उनमें से टॉप 50 लेकर चले गए, 50 रह गए, जबकि आपने भी कोडिंग किया हुआ था, आउटपुट सही आ रहा था, आपको लगता था कि मेरा सही है, लेकिन आपको कॉल नहीं है। उसके रीजंस है, सिर्फ आउटपुट लाने से ही प्रोग्राम सही है ये नहीं। कॉम्पिटिटिव कोडिंग का मतलब है कि जब आप प्रोग्राम लिख देते हो, जब आपका आउटपुट आ जाता है, वहीं से आपका काम स्टार्ट होता है। एनालिसिस पार्ट, क्या जो आपने कोड लिखा है वो कोड एफिशिएंट है या नहीं है। अगर एफिशिएंट है तो इसमें और कितना एफिशिएंट आप लिख सकते थे इसको, और कितने लाइन ऑफ कोड कम कर सकते थे। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो 2 मिनट का टाइम लेकर आप इसको बताइए कि इसमें आप कैसे लिखेंगे, इसकी कैसे कोडिंग करेंगे। अगर कोई अपना कोड या कुछ भी ऐसा शेयर करना चाहता है, चैट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकता है कि आप जो भी लिख रहे हो, मैं यहाँ से देख लूंगा। अदरवाइज यहाँ भी आप बोल सकते हो, सभी लोग अलाउड। सर हाँ, इसमें सर पहले सर मैं वो स्लाइड को दे भाई सर। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉर्ट कर देंगे पूरा, उसके बाद सर स्टार्टिंग के 6 एलिमेंट को ले लेंगे तो मिनिमम सम निकल जाएगा, एंड लास्ट के 6 एलिमेंट्स को सम कर देंगे तो मैक्सिमम सम निकलेगा। गुड, बिल्कुल सही है आपका आउटपुट, बिल्कुल करेक्ट आएगा। अभी ये देखिए एक सोल्यूशन आपने सही बताया, इसको भी डिस्कस करेंगे, सॉर्ट करेंगे, ठीक है। सॉर्ट, और कोई, और किसी का डिफरेंट कुछ अलग? सर ऑर्डर ऑफ एन में भी कर। हाँ, वही ऑर्डर ऑफ एन में कैसे करेंगे? हम माइनस कर देंगे सब में। बताइए, सही जा रहे हो आप, बताओ क्या नाम है आपका? सर हर्ष हर्ष त्यागी, त्यागी। हर्ष त्यागी, बताओ हर्ष। आपको बताओ बस, बाकी तो यहाँ पे देखेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मिनिमम सम निकालना है ना सर इसमें, मतलब मिनिमम जो सम और D1। मैक्सिमम सम। हाँ, मिनिमम सम और मैक्सिमम सम। तो सर मिनिमम सम n-1 एलिमेंट निकालना है, तो सर सम निकाल लो n तक का, और उसमें से मैक्स एलिमेंट माइनस कर दो सर।
और सर ऐसे ही इसको उसका विपरीत कर दो सर, मिनिमम निकालने के लिए उसमें से मैक्स माइनस कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। अब देखो Thank you. ऑर्डर ऑफ एन टाइम, अभी जो आयुष ने बताया था जो आंसर, इसमें क्या कह रहे हैं कि इसको सॉर्ट करेंगे। तो ठीक है, आप सॉर्ट करोगे और तो देखो सही आएगा। अभी देखो आप ही लोगों में से जो आंसर बताया अलग अलग हो गया। अब इसको हम लिखते हैं। अब यहाँ पर कर दिया आपने, सॉर्ट किया 2 3 4 8 9 10 और 11। अभी तो हम छोटा सा एक नंबर लेकर चल रहे हैं। अब इसको लार्ज स्केल पे समझ लेना कि एन नंबर्स हैं, ऐसे ही एन नंबर्स है। अब एन नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए, एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। अभी जब आप सॉर्टिंग पढ़ोगे, अभी आप कौन से में हो, ये कौन से क्लास में हो, कौन से ईयर चल रहा है आपका आयुष? अभी सेकंड पता नहीं सर। सेकंड ईयर, ठीक है। हर्ष, आप कौन सी ईयर में हो? सेकेंड ईयर में सर, अभी तो मतलब थर्ड में आ रहा हूँ सर। तब सेकंड ईयर पास हो गए ना? तो सॉर्टिंग पढ़ लिए होगे, सारे सॉर्टिंग पढ़ लिए होगे। अब सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ लिए होगे तो आपको ये पता होगा कि जो सॉर्टिंग की जो बताया गया है, तो कोई भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम एन लॉग एन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन से कम में सॉर्ट नहीं कर सकता है। मतलब एन लॉग एन तो लगना ही है। और अगर कोई अभी जस्ट फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर में जा रहा है तो वो 3 एल्गोरिथम पढ़े होगा, बबल, सिलेक्शन और इंसर्शन, तो उसमें तो और भी ज्यादा लगता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लगता है। तो सॉर्ट करने में ही आपने इतना लगा दिया, फिर n-1 एलिमेंट्स को सम करोगे तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा जा रही है बेटा, ठीक है। तो अब इसको जो सॉल्व करने का जो एफिशिएंट तरीका है, जो अभी हर्ष ने बताया, कि हम लोग क्या करें कि इसमें से सबका सम निकाल ले और निकालते ही मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट पता कर लें, ठीक है। म्यूट कर लीजिए बेटा, म्यूट कर लीजिए, जब बोलना होगा तो अनम्यूट करिए, अभी म्यूट कर लीजिए, नॉइज आ रही। ये कुलकर्णी, मयूर कुलकर्णी, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमें जब पता है कि क्या करना है, मिनिमम सब निकालना है। इसका मतलब कि जो सारे एलिमेंट्स हैं और एक ही एलिमेंट को हमें छोड़ना है, तो हम अगर हमें मिनिमम सब निकालना है तो सबसे मैक्सिमम वाले एलिमेंट को अगर हम छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली मेरा जो सम होगा वो सबसे मिनिमम होगा, ठीक है ना। और अगर जब हम मैक्सिमम सम निकाल रहे हैं तो उसमें एक एलिमेंट को हमें छोड़ना है, बस n-1 बोला गया है। तो अगर हम सबसे मिनिमम एलिमेंट को छोड़ देते हैं तो जो हमारा सम होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब जब कोड लिखेंगे इसका, बहुत ही सिंपल सा कोड लिखेंगे। क्या करेंगे, पहले सबका सम करेंगे, उसके साथ ही मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करते जाएंगे। चलिए कोड भी लिखना स्टार्ट करते हैं साथ। अब इसके लिए क्या करेंगे, एक लूप चला लेते हैं। अब ये एरे है तो i = 0 से लेकर n तक चलेगा, क्योंकि n-1 मैक्सिमम इंडेक्स होता है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लेंगे, एक ले लेंगे इंट min, इसकी वैल्यू रख लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ऐसे ही मैक्स ले लेते हैं, मैक्स को भी फर्स्ट एलिमेंट ही डाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या होगा कि एक सम भी ले लो, यहाँ पे एक सम ले लो, सम की इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 रहेगी, ठीक है। अब हर बार हमें करना क्या है कि सम इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ i कर दिया,
एलिमेंट को ऐड कर दिया सम के अंदर, साथ में हम उसको चेक कर लेंगे कि क्या है। इफ a of I is greater than max, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, मैक्स इक्वल्स टू sum of I is greater than max, it means max equals to a। तो ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, या ऐसे एल्स भी लगा सकते हो या सिंपल इफ भी लगा सकते हो। इफ a of I is less than min, it means we'll update our min and we'll say min equals to a of I। अब ये जो लूप चलकर जब बाहर हम आएंगे इस लूप से, तो होगा क्या कि सम के अंदर तो सारे एलिमेंट का सम होगा, ठीक है, और साथ में हमारे पास जो मैक्स होगा इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट, और जो मिन होगा उसमें मिनिमम एलिमेंट ऑफ द लिस्ट होगा। तो हमें प्रिंट क्या करना है, एक लाइन का बस हम कोट करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रिंटफ करना है, यहाँ पे प्रिंटफ लगाना है, प्रिंटफ %d %d, फर्स्ट इज द मिनिमम सम एंड सेकेंड वन इज फॉर मैक्सिमम सम। अब बताइए मिनिमम सम में हम क्या पास करेंगे, सम में से किसको माइनस कर दें, सम में से अगर हम मैक्स को माइनस कर दें तो हमारा मिनिमम सम होगा, और अगर हमने सम में से मीन को माइनस कर दिया तो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। बस सिंपली हमने क्या किया, ऑर्डर ऑफ एन टाइम में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जिसको अगर हम बिना ये अप्रोच अगर यूज किए हुए अगर इसको हम लोग सॉल्व करने जाते तो हमारा n log n तो मिनिमम लग जाता हमें सॉर्ट करने में, अगर हमें एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम पता है तो, और साथ में हम सम करने की ऑर्डर ऑफ n तो लगाते ही, और साथ में प्लस ऑर्डर ऑफ, तो कुछ एक्स्ट्रा इतना टाइम लग जाता है हमारा प्रोग्राम, तो आउटपुट सही देगा, आउटपुट विल बी करेक्ट, बट द प्रोसेस इज रॉन्ग। तो विल ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग्स। सिंपली भी मॉर्निंग में बता रहा था कि हम जो पाइथन या उस टाइप कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम यूज कर रहे हैं जहाँ सारी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं। अब जैसे इसी प्रोग्राम को आप जब सी में लिखने जाओगे तो सॉर्ट का कोई फंक्शन नहीं है बस, तो आप थोड़ा सा लेजी हो जाओगे, सॉर्ट का पूरा कोड लिखना पड़ेगा, कुछ और सोचोगे कि बिना सॉर्टिंग के काम चल सकता है क्या। लेकिन अगर मान लो आप क्या सॉर्ट फंक्शन पड़ा हुआ है, लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, एक लाइन लिखना है सॉर्ट, लेकिन एक लाइन आपने लगाया सॉर्ट, और उस सॉर्ट को लगाने से ही जो कॉम्प्लेक्सिटी है आपके कोड की वो बढ़ गई। जो काम ऑर्डर ऑफ एन टाइम में हो सकता था वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में या ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में जा रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है। तो हमें इसको भी क्या करना है, रिमूव करना है, इसको भी हमें रिजॉल्व करना है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. अब एक सिंपल प्रोग्राम करते हैं, सिंपल फेबने की सीरीज सभी को आती है, तो ये किसमें हम थोड़ा टाइम देंगे आपको, और से अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा आपका। अब हमें पता है कि पहले मैं फेबने की सीरीज बता देता हूँ, वैसे हालांकि पता सबको है, फिर भी मैं बता दूं कि फेबने की सीरीज क्या होता है। फेबने की सीरीज का फर्स्ट टू टर्म जो होता है वो 0 और 1 होता है। नेक्स्ट टर्म क्या होता है कि प्रीवियस जो टू टर्म्स है इनका सम, इनका जो सम होता है नेक्स्ट टर्म होता है 1 हो जाता है। अब ये जो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आएगा प्रीवियस टू टर्म्स, इनका जो सम है वो थर्ड टर्म हो जाएगा। ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा 5 8, ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 13, ठीक है, 21 एंड सो ऑन। तो हमारी जो फिबोनाची की सीरीज बनी वो क्या होती है, प्रीवियस टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म हमको पता होता है 0 1, इसके बाद 1 2 3 5 8 13 21 एंड सो ऑन, ये होता है हमारा फिबोनाची सीरीज। तो जब हम इसको मैथमेटिकल सॉल्व करने जाते हैं, या हम मान लीजिए इसको हम रिकर्सिवली सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई
रिकर्शन यूज कर लेते हैं, बोलते हैं फिबोनाची का एक हमने लिख दिया फिबोनाची। nth टर्म हमें पता करना है कि फिबोनाची सीरीज का nth टर्म क्या होगा। इसमें हम लोग पता करते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 होगी या n इक्वल टू 2 होगी, तो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर देंगे n-1 रिटर्न कर दो। अगर 1 होगा तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 0 होती है, 0 रिटर्न कर दो। अगर n की वैल्यू 2 है तो 1 रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो रिकर्सिवली हम उसी को कॉल कर देते हैं, बोलते हैं कि भाई फिब n-1 प्लस फिब n-2, ठीक है। n-1 टर्म, nth टर्म की हमें वैल्यू चाहिए, nth टर्म की वैल्यू चाहिए, तो फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2 जो रिटर्न करेगा वही हमारा फिबोनाची सीरीज हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल, ठीक है, ये प्रोग्राम हमने लिख दिया। अब आपको इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा रिवर्स करके पूछा जा रहा है। आपको एक वैल्यू दे दी गई, मान लीजिए आपको बोला गया कि a number is given, suppose 8 is given to you and you have to find whether 8 is the Fibonacci term or not। तो वो जो 8 है वो Fibonacci सीरीज में आता है या नहीं आता है। अभी तो मान लो स्टार्टिंग में आपने ये लिख दिया नंबर, इसलिए आपको दिख रहा है। आगे बहुत बड़ा, बहुत मान लो Fibonacci टर्म जो है 1000 टर्म है, उसके बीच में का कोई एक नंबर उठाकर आपसे पूछ दिया गया कि आप बताइए, सिर्फ आपको बताना है ये कि whether this number is Fibonacci, is Fibo or is not Fibo, is not Fibo। आपको ये बताना है कि क्या वो फिबोनाची है या फिबोनाची नहीं है। आपको दो चीजें बतानी है, यस या नो। आप कैसे इसको बताओ, थिंक अबाउट दिस, फिर बताइए मुझे आप कैसे आप इसको बताओ फिबोनाची का टर्म है या नहीं एज अ प्रोग्रामर। सर पहले ही स्टोर कर लेंगे एक एरे में और फिर सर्च कर लेंगे। यही सोचेंगे सिंपल एज ए प्रोग्रामर कि भाई सारे फिबोनाची जो है कि सीरीज की जो टर्म्स हैं उनको कहीं स्टोर करके रखें। तो पहले तो उतने टर्म्स निकालने के लिए हमें पूरी फिबोनाची सीरीज निकालनी पड़ेगी, बताइए। और भाई एक टर्म निकालने के लिए आपको कितने कॉल करने पड़ते। हाँ सर इसी तरह से कर लो सर, 5n² + 4 और 5n² - 4, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर आता है आपका हाँ तो फिर हो जाएगा फिबोनाची। गुड, वेरी गुड। किसने आंसर दिया ये? हर्ष। हर्ष, वेरी गुड हर्ष, कीप इट अप। थैंक यू सर। ओके, तो देखो इसने बोला कि हमें हमेशा जब भी हम क्वेश्चंस पे जा रहे हैं तो हमें पहले एज ए प्रोग्रामर होना भी चाहिए। एज ए प्रोग्रामर हमें ब्रूट फोर्स अप्रोच मिलता है तुरंत कि कैसे इसको हम मतलब प्रोग्रामिंग में सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज, उसको पता है कि सारे टर्म्स को करके सेव करा लेंगे और उसके बाद उसमें से हम देख लेंगे, सर्च कर लेंगे कि ये टर्म है या नहीं है। अब इसमें स्पेस भी खर्च होगा और टाइम भी लगेगा, ठीक है। रिकर्सिवली हम कॉल कर रहे हैं, सारे n टर्म्स हैं, हर टर्म के लिए हमें रिकर्सिवली 2 की पावर n कॉल करना पड़ रहा है फिबोनाची का। ये डीपी का प्रॉब्लम बन जाता है। 2 की पावर n कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, है ना। हर बार दो रिकर्सिव कॉल हो रही है। अभी उतना डिटेल नहीं जाते हैं बिल्कुल रिकर्सिव कॉल में। अभी रिकर्सन का एक मेरा सेशन है तो मैं उसमें पूरा डिटेल में रिकर्सन का कैसे कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं और रिकर्सन कैसे एग्जीक्यूट होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम बिल्कुल अप्रोच की बात कर रहे हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसमें। तो अब सिंपल से अगर हमें इसको निकालना है, जैसे तुम बताया, आपके पास मैथमेटिकल अप्रोच पता है, प्रॉपर्टी पता है फिबोनाची सीरीज की। उसमें कहा जाता है कि अगर कोई नंबर 5 इंटू n² + 4 एक होता है और दूसरा होता है 5 इंटू n² - 4, अगर इन दोनों में से चाहे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए या ये वाला परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, दोनों में से कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो इसका मतलब कि वो फिबोनाची सीरीज का टर्म है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिबोनाची सीरीज का टर्म नहीं है। कितना सिंपल है, मतलब ये कैलकुलेशन करने में आपको कांस्टेंट टाइम लगने वाला है। whether this is the
पार्ट ऑफ यूनिक सीरीज और नॉट, इट विल टेक कांस्टेंट टाइम, कैलकुलेशन तो करने हैं आपको। अब इसमें आपको चेक करना होगा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करोगे? कोई भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे? अभी ये जितने प्रॉब्लम्स मैं करा रहा हूँ ऑलमोस्ट ये सभी कहीं न कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं, तो इनके सभी के लिंक अभी मैं इसमें आपके शेयर कर दूंगा 10 मिनट के अंदर। इन सभी को आप ट्राई करके देखिए। कुछ जैसे मुझे ये वाला लग रहा है और कुछ एक दो लग रहा है, उसको मैं यहीं पे कर दूंगा, ठीक है, और बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हमारा जो हैंड्स ऑन सेशन है, आई थिंक शेड्यूल में डे पे है हैंड्स ऑन सेशन। Yes, sir. It is on day 2. डे 2 लास्ट में। तो कल आपका हैंड्स ऑन होगा, इसमें ये सब जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप इसको प्रैक्टिस करके आइए, सभी के डिस्क्रिप्शन लिंक में सब शेयर कर देंगे आप लोग के साथ। इसको खुद से ट्राई करिए और जहाँ पे प्रॉब्लम्स है उसको लेकर आइए। तो जितने भी हैं जो और भी लोग हैं ये लाइव रहेंगे के साथ आपके प्रॉब्लम्स क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, लाइव कोडिंग कराने के लिए। अभी फिलहाल हम लोग अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि भाई इन प्रॉब्लम्स को हम बहुत ही इजीली कर पा रहे हैं, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जा रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है, स्पेस भी बच रहा है कुछ प्रॉब्लम्स में, स्पेस और टाइम दोनों को रिड्यूस कर दे रहे हैं। देखिए आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, आउटपुट तो सेम आना है। बात यही है कि अप्रोच आप कैसे सॉल्व करते हो, और आपको क्या करना है, बड़ी कंपनीज बड़े टारगेट्स लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आपको एफिशिएंट कोडर नहीं रहोगे तो वो फिर वो भीड़ रहेगी, फिर उसमें सभी को सिंटेक्स, आज के टाइम में प्रोग्रामिंग सिंटेक्स सीखना बहुत आसान है। अगर कोई भी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आ रही है, सी प्रोग्रामिंग सीख लिया, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना है तो विद इन 1 मंथ आप एक्सपर्ट हो जाओगे। मुझे लगता है कि मतलब उसको सीखने में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बेसिक्स जो है वो जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल सेम है। अगर किसी को सी आती है, पाइथन सीखने जा रहा है तो बहुत कम टाइम लगने वाला है, सब कुछ एफ एस कंडीशनल ऑपरेटर वगैरह एक दो चेंजेस हैं, छोटे छोटे चेंजेस, ऑल आर सेम, बहुत आसान है। इसलिए कहा जाता है सबको सी पढ़ने के लिए बोला जाता है, बेसिक सी पढ़ लो, उसके बाद किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच कर जाओ। सी प्लस प्लस सी पूरा यूज होता है उसमें, बस आपको इनपुट आउटपुट फंक्शन और कुछ लाइब्रेरीज बदल जाती है। जावा ऑपरेटर्स बेसिक फंक्शनलिटी प्रोग्रामिंग की कोई भी चेंज नहीं होती है, बेसिक प्रॉपर्टी वही है। प्रोग्रामिंग सिंटेक्स तो सबसे मेन पार्ट है कि आप लॉजिकल थिंकिंग, एज अ डेवलपर आप बनते हो तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग ही चेक की जाती है कि आप कितना एफिशिएंट सोच पा रहे हो, आपके पास अप्रोचेस कितने हैं और किस किस एंगल से आप सोच पाते हो, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी कितनी है, एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी कितनी है, ये सभी के मार्क्स होते हैं। बहुत सारे एचआर से बात भी हुई, वो मॉक वगैरह चलते थे, तो उनमें उनके जो पास एक एक शीट होती है, एक पैरामीटर्स होते हैं, उसमें हर एक पैरामीटर के पॉइंट्स लिखे होते हैं, उस पे वो पॉइंट्स देते हैं कि इनकी एनालिटिकल स्किल कितनी है, प्रोग्रामिंग स्किल कितनी है, इनकी प्रोजेक्ट्स की कितने हैं, सभी के मार्क्स होते हैं, फिर ओवरऑल जज किया जाता है, ओवरऑल कमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया, जैसे अभी शॉर्ट वाला जो आंसर किया हुआ था, क्लियर है ये? और जो स्टोरेज वाला अभी जो आंसर दिए थे आप, इसके लिए ये जो अप्रोच हम लोग यूज कर रहे हैं सिग्नल की टर्म पता करने का, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मतलब आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, मतलब, और आई रियली अप्रिशिएट हर गुड। ओके फाइन। तो मान लीजिए एक और इसी तरीके से
क्वेश्चन हम लोग कुछ करते हैं, ट्राई टू सॉल्व। अभी एक बहुत ही सिंपल अभी लिखा था इसका suppose there are n bulbs, okay, इस तरीके से बल्ब्स हैं, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि इनमें जो बल्ब्स हैं वो ऑन या ऑफ हो सकते हैं, मतलब इनका स्टेटस 0 या 1 हो सकता है, 0 या 1 हो सकता है, 0 या 1, 0 1, 0 1, 0 1। ये पूछा जा रहा है कि कितने तरीके से इन लाइट्स को, ये जो लाइट्स हैं, ये एक्चुअल में प्रोग्राम भी है, ये पड़ा हुआ है आपका हैकरिंग प्लेटफॉर्म का प्रोग्राम है, दिवाली लाइट्स के नाम से, ठीक है। बोला जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें ये जो बल्ब है उनको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। बस हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि किसी भी टाइम पे एटलीस्ट वन बल्ब, मतलब एक बल्ब कम से कम ऑन रहना चाहिए, कम से कम ऑन स्टेट में रहना चाहिए। अगर मतलब सबको हमने ऑफ कर दिया तो जो एक है वो क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए हर एक में से। चाहे ये वाला ऑन हो जाए, ये वाला ऑन हो जाए, बाकी सब ऑफ हो जाए, ये ऑन हो जाए, सब ऑफ हो जाए। तो इस तरीके से टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ये आपको बताने हैं। ये भी प्रोग्रामिंग का पार्ट है, लेकिन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे? सही सोचकर। सर 2 की पावर n-1। 2 की पावर n-1, वेरी गुड। कौन आंसर किया? व्हाट इज योर नेम? सर कार्तिक मित्तल। वेरी गुड। यू आर इन फर्स्ट ईयर? यस सर, अब सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर में आ गए, वेरी गुड कार्तिक। तो बहुत अच्छा आंसर किया, बिल्कुल करेक्ट। आपने किसका? ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो अब हमें यहाँ दिख रहा है, अब सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अब सोचिए कि ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपके पास मैथमेटिकल नॉलेज है, तो कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं कि कितने तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम बन गया। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। एन बल्ब्स हैं 2 की पावर n, एक हमेशा हमें ऑन ही रखना है कंडीशन में, तो n-1 तरीके से हम उसको कर सकते हैं, 2 की पावर n-1। कितना आसानी से आपने इसको सॉल्व कर दिया अगर आपके पास मैथमेटिकल नॉलेज है तो। ओवरऑल द कंक्लूजन ऑफ the session is you have to practice the mathematical approaches. If you are strong in mathematical background, if you are strong in logics, definitely you will be a good competitive coder, you will be a good programmer, you will be optimized programmer, or we can say you will be efficient programmer. Okay. तो अभी देखिए हमारे पास कुछ ये प्रोग्राम्स के लिंक हैं जो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, इनके अप्रोचेज में डिस्कस कर रहा था, ठीक है। ये सब किसी न किसी प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है आपका फिबोनाची सीरीज का, जो मैंने टर्म बताया, ये आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन है फिबोनाची सीरीज का। आपको लगा आप लोगों ने आंसर किया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं और मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं ये। कुछ कुछ इजी लेवल के हैं, मान लीजिए मिनी मैथ्स और मिसिंग नंबर, ये आपका गीक्स फॉर गीक्स पे है, ये हैकर रैंक पे है। स्क्रीन विजुअल है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ये जो है प्रॉब्लम्स ऑफ DY लेट्स हैकर रैंक का मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, ठीक है।
देखिए कितना आसानी से आप लोग लॉजिक बता दे रहे हो। अब लॉजिक बता दिया, आपको प्रोग्रामिंग सी की आती है, उतना ही जरूरत है, तो कोड लिखोगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस लगता है कि बहुत ही टफ है, लेकिन ऐसा है नहीं, इतना भी टफ नहीं है कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम। अगर इतना टफ होता तो फिर बस केवल अप्रोच बदलने की जरूरत है। आप जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अभी जितने भी ये हम लोग कंबाइंड कर रहे हैं, जितने डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी की लिस्ट बनाकर आपको शेयर कर दी जाएगी। और ये सभी के बीच बीच में जो हैंड्स ऑन सेशंस होंगे उसमें कराए भी जाएंगे। तो अभी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ टाइमिंग का, कब मुझे सेशन एंड करना है। तो कोऑर्डिनेटर को ही है पे। अभी सेशन कितने बजे एंड करना है मैम? Sir, we have time till 4:30. 4:30, ओके। Yes, sir. तो अभी फिलहाल क्या करें इसको, फिर आपको शेयर कर देते हैं ये शीट्स। ठीक है, ग्रुप होगा मैम इनका, इनके ग्रुप में मतलब इनके पास शेयर हो जाएगा, मैं शीट प्रोवाइड Yes, कर sir. दूंगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You can share it in chat box, or you can share it to me. I can share it in the Yeah. WhatsApp group. Okay, fine. I will share this file to you. Just share in the WhatsApp Okay, group. fine, sir. They will practice it. Any query? Any queries, guys? Anyone ask something? किसी कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? हमारे पास 3-4 मिनट का टाइम है सेशन फिनिश करने में। Anyone? So I hope objective of this session is clear to all of you. You have learned how can we use mathematical approach to solve various problems in efficient way. If you don't use these aspects, definitely it is not possible to solve efficiently. That's why it is very important, and it is the part of all recruitment process of all the companies. Okay, so do practice, and I think सभी लोगों के पास हैकर अकाउंट और लीड कोड अकाउंट बन चुका होगा। के पास भी नहीं है, कल तक आप अकाउंट्स बना लीजिए, क्योंकि कल हम लोग लाइव कोडिंग करेंगे। 2 घंटे का पूरा सेशन इसी में रहना है, लाइव कोडिंग चलनी है। हम भी कोड करेंगे, आपको भी कोडिंग करना है, साथ में हम स्क्रीन शेयरिंग करेंगे। ठीक है, आप भी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन शेयर करोगे, और वहां पे देखेंगे कि सभी लोग कितने अलग अलग अप्रोचेस के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और कौन सा बेटर है। ये जो एक्सरसाइज है, ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। एक तरीके का मतलब अलग अलग तरीके के आपके पास अप्रोचेज आएंगे, कुछ ऐसे भी सॉल्यूशंस आएंगे जो जिसके बारे में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। तो अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या, एफिशिएंट है या नहीं है, ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, दैट इज डिफरेंट मैटर। वो तो हम उसको एनालाइज करके देखेंगे कि ये किसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, कितना टाइम उस पे लगने वाला है, अलग मैटर है। लेकिन एटलीस्ट हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस जब होंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी तरीके से हम प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, और कौन सा वाला बेस्ट है, और किस सिनेरियो में हमें कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा अप्रोच कहाँ पे यूज करना चाहिए, ये भी हम देख पाएंगे। तो हमारी एनालिटिकल स्किल जो है वो इम्प्रूव। ठीक है, एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड, एनीवन? Overall day 1 finished work. For next session and onwards, you need any you have any suggestion, any kind of improvement, you can share here.
Okay. Thank you all. Does anyone have any query? No, ma'am. Okay, so thank you so much, Chandrahas sir, for sharing your knowledge and made us all of us to give all of us a deep knowledge about how cracking the mathematical challenges in programming and this. And thank you all the listeners who have joined the sessions. We will look forward for your presence in the upcoming sessions. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you all. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, Chandrahas sir. Thank you, Ashi ma'am. Dear all the participants, I am sending your quiz link and as well as the feedback link for the day 1 in the chat box. Kindly please spare your few minutes and give the quiz and please submit the feedback link. Okay, ma'am.